Assalamualaikum grade 5. I am your maths teacher Varda. Students, we were doing information handling chapter number 9. So now we are going to start with the exercise. So let's move towards the board. Okay student, I am going to read out the question for you first. Following is the weight in kg of 20 students of class 5. And you can see there are number of weights. And then what they have asked us, construct a table and draw the vertical bar graph. Exactly. Students, अगर आप recall करेंगे कि हम information को किस तरह proceed करते हैं. First of all, we need to have a data जो कि हमारे पास given है. फिर उसके बाद next step क्या होता है? We organize that data. We organize in the form of table. We can organize it in the form of anything which has been asked to you. Then we put it into the graph and then we interpret. Put it into the graph means that you have to represent or present the data in any form. It can be the vertical graph, bar graph, line graph. It depends upon the data. Okay, over here हमारे पास जो data given है वो हमें given है raw form में. Data is given. अब हमने इसको क्या करना है? जो हमारे पास second step है that is for organizing. I'm going to put the data into the table. Table के लिए we need to include the tally marks into it. टेलीमार्क्स टेल्स यू दैट कि वो चीज कितनी बार अकर हुई है या वो इवेंट कितनी बार आया है. फिर उसके बाद हम उसको किस ग्राफ में शो करेंगे? वी आर गोइंग टू शो इट इनटू द वर्टिकल बार ग्राफ. सो नाउ आई एम गोइंग टू पुट दिस डेटा इनटू द टेबल. सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट बोर्ड. सो स्टूडेंट्स, यू कैन सी दैट मैंने पहले ही आप लोग के लिए एक टेबल ड्रॉ कर लिया है जिसमें मैंने नंबर ऑफ वेट्स को लिख लिया है और उसकी अकरंस को अब मैं आपके साथ मिलके हम इस टेबल के अंदर डालेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो वेट है दैट इज 12. वी आर गोइंग टू सी के 12 कितनी बार डेटा में आया है या 12 कितने बच्चों का वेट है. इफ यू आर गोइंग टू सी इन द फर्स्ट रो, दिस इज 12, 1 2 3 4. इफ यू कैन यू सी एनी 12 इन द सेकेंड रो? नो. सो हमारे पास 1 2 3 4 कितनी बार आया है? 4 टाइम्स. नाउ सेकेंड नंबर इज 13. 13 kg कितने बच्चों का है? इन फर्स्ट रो इट्स 1. सो दैट मीन्स 13 कितने का है? 1 का टेलीमार्क 1 एंड द अकरेंस इज 1. 14 को देखेंगे हम. 1 2 3 4. आई होप बच्चों यू आर ऑल्सो डूइंग इट विद मी. देन कम्स 15 kg. 15 kg कितने स्टूडेंट्स का आया है? 1 2 3. 16 को हम देखेंगे. 1 2 3. Then comes 17. We don't have 17. Now moving towards 18. 18 सिर्फ हमारे पास 2 बच्चों का आया है. 19 हम देखते हैं. 19 हमारे पास एक बच्चे का आया है. And 20 we have 2 kids only. So children, we are done with collecting the data and putting it into the table. Now we have organized the data. Now we are going to present this data in the form of vertical bar graph and then we are going to interpret it according to the different questions. So now let's move toward the board and I'm going to show it to you कि हम इस data को bar graph में किस तरह add करेंगे. So now let's move toward the next board. So now students, हमने पहले data को देखा. Then we organize that data. अब हम इसे present करने लगे हैं in the vertical bar graph. So now मैंने आपके सामने एक bar graph draw कर लिया है. इसके components डाल लिए हैं. यहाँ पे मैंने x axis पे लिखा है weight in kgs और हमारे पास y axis पे है number of students. Vertical bar graph is from top to bottom. So अब मैं check करूंगी with the help of this table कि 12 kg कितने बच्चों का weight था? It is 4. So I'm going to draw a bar over here. You are also going to use your pencil and ruler for drawing this graph. अब हम सेकंड पे देखेंगे 13 kg कितने बच्चों का है? It's only 1. So I'm going to put it over here. 14 kg कितने का है? कितने बच्चों का 14 kg weight है? It's 4 kg. It's 4 students. 15 is 3. I hope that you are also drawing it with me with the help of ruler and pencil. Now, if you're going to see 16 का हमारे पास है how many
children is having 16 kg? It's 3. You have to keep on referring with your table to get the exact numbers. 17 हमारे पास कहीं पे भी नहीं है. Then 18 कितने बच्चों का है? 2 बच्चों का 18 है. 19 एक बच्चे का है. और 20 हमारे पास है 2 बच्चों का. So now we are done with the graph. So student, this is how you're going to present your graph in this way. You should have your weights in kgs, you should have the number of students on y-axis, and this is how you're going to draw. And then if you want to make it more nicely, you can color it even. So after that, iske baad kya ho sakta hai? You can even ask the questions by yourself with the help of these graphs, that how many children is above 15 kg, then how many children, if you can ask the questions in different ways, that how many children are having more weight and how many children are above 12 kg, how many children are below 18 kg. You can come up with any of the questions. So this is your task, that after making this bar graph, you are going to ask 3 different questions, and then you can answer it by yourself even, or you can ask your partners to fill it up. So I hope that you understood this lecture. Take care. Allah Hafiz.